Namaskar. We would like to welcome you all on behalf of Independent Research Ethics Society, AYUSH Samriddhi International Webinar Series at milestone of 2083. Thank you for your overwhelming support for these achieved milestones. I would like to welcome all the speakers, and we are celebrating today International Day of Clean Energy. So without wasting much time, I would like to invite Professor V.K. Agnihotri sir for his blessings. Then after my preamble, we will be able to invite speakers. Thank you, Professor Pawan Sharmaji. As you informed that we are now stepped in 2083, a number of webinar this at this time, and our topic of the today's webinar is the application of the green energy, or in the commemoration of the International Day of Green Energy. So the theme is that it's very important to have such type of clean energy, in the sense that whatever the sources are with us, we should be capable to utilize and to use them properly, and there should not be any sort of that wastage to make it burden for the other persons. And meanwhile, we can restore our other energy sources with the help of the having the devices and form of the clean energy. A few words from my side, and then I would like to invite Professor Pankaj Sharmaji to make the subject more clear in a form of the preamble of this topic. Yeah, Professor Pankaj Sharmaji. Thank you very much, sir. Now I would like to share my PPT. Clean energy technology. Am I audible, sir? Presentation is visible? Yes. Clean energy technology means use of a technology that can reduce carbon emissions and other harmful pollutants. Finish. This is think green concept is there. Why we need? Industrial revolution, which started a couple of 100 years ago, approximately 200 or 300 years ago, industrialization is more in progress. So we need to balance that. We need to reduce that. And coal and burning oil, these two are the main sources of energy, either coal or oil. So future Yes, sir. energy will be there in clean energy. So why we need clean energy? Most of our electricity comes from power station that use fossil fuel like coal or oil, whatever it may be. The power station burn that fossil fuel to make our electricity and process a lot of greenhouse gas, including carbon dioxide and methane. So this is why they are called dirty sources of energy, not clean sources of energy. So this is the example of dirty sources because they are polluting our environment in the world. So means I am not going very detailed, but now various clean development mechanism CDM, as is explained by 2016, is the one-off flexible mechanism of Kyoto Protocol, started with the setup of Executive Board in November 2001 and registered the first CDM project, Clean Development Mechanism 2004. So, reduction of greenhouse gases and contribution to sustainable development to the host country. These are the two aim of that CDM. Sustainable Development Goals and Sustainable Energy, UNCSD from July 14. Goal means these are the mission by the government of different countries to reduce unwanted pollutant gases
as well as to reduce global warming with clean energy. So, 3S, source, system, and service. This is the root of sustainability. So, source is now cleaned in a solution. System, specific systems are there. Process improvement, efficiency increase, system integration, multi-generation. We were moving on steam engines and now we are moving to Vande Bharat Express on electricity. Imported routes for clean energy from fossil fuel. So we all know about this. Fossil fuels are there, oil or coke. So they are giving burning out and they are giving energy. Modification of conventional techniques are also necessary. Process, design, treatment system. Newer technique, gasification, oxy-fuel combustion, chemical looping, direct liquefaction, waste breaking, delayed cooking. Means so many technologies have been introduced now for our clean energy world. Conventional power, coal, nuclear, oil or natural gas. Renewable energy, large hydropower or municipal solid waste. We are also maintaining energy from out of those sources also. And then green power. Green power means wind, solar, biomass, geothermal, biogas, low impact hydropower. So these are most beneficial in comparison to renewable energy also. So advanced clean electric power technology, wind power, biopower, solar power. We all know these, but this has to remind you that these are in process and in progress. Advanced clean electric power technology, carbon capture and storage, CCS, nuclear power, hydropower. Very means so many utilities are there. Advanced geothermal energy, fuel cell, marine hydrokinetic power. How many ways are there to clear, to create, to generate energy out of which we can sustain ourselves for our needs? Solar energy, we all are knowing about it. Wind energy is the most underutilized energy resource in world. Water energy, now hydropower stations are in have been established already. So tidal and wave energy is also being used to generate energy. Geothermal, when hot water and steam found beneath the earth's surface, hot springs, we say. So geothermal energy is also being used to produce something. Biogas energy, that is also being used. Examples of clean energy technology, just see hydrogen and oxygen. In India also, hydroxy means water cars will also be not dream in means very soon they are about to be launched. So these are clean examples of clean technology. Just see in comparison of that Dhua party, now wind power, water power, we all are rooftop solar panels, wind turbines. Just see a small wind turbine, a real estate can do it where wind is in huge quantity. So solar oven, we all already know hydropower. Already in our country it is popular. Solar water heating already being popular now. Solar air conditioning. This solar air conditioning, solar heater like solar heater. Power wall. Power wall is a large rechargeable battery that can store several kilowatt hours of electricity. So this is power wall. Clean energy benefit the economy, energy security, economic development, price stability, and generally our future is based on now clean energy. Thank you very much for patience hearing. This was my preamble on clean energy. Now I would like to
request Dr. Suparna Sanyal Mukherjee Madam for his speech on clean energy. Thank you very much. There is too much internet problem. That's why I have come to the outside, and I am standing in the under the lamppost, and it is very cold over here. So, however, very shortly, because there Salute, is salute, no salute. Really salute. Okay, thank you. This is dedication of my to the Ayush Samriddhi and my endeavor to give to share in this Ayush Samriddhi platform, and I am really thankful and grateful to the Ayush Samriddhi platform who has given me such an opportunity, and I should not miss this opportunity. That's why I have in the cold I am just standing over here. So, however, I should not waste time. So, two things I have to say regarding the previous I couldn't attend because the problem. So, one thing geotagging is very important for this. Today's sector, just because when we have seen any tsunami and COVID situation has happened, through this geotagging, we can locate the isolated people like sentinels. How at the time of tsunami, what was their conditions? Only the system, the internet system, and this helicoptering system, we have identified their what was their situation. So geotagging is very interesting and very important points nowadays to locate the isolated people where there is no system. Once what has happened, it is the fact that in the jungle we have there is it trekking and raking, and we have lost the sites where we have to go. But that time geotagging has helped us to find out the location where we can get into. So that's why the geotagging is a very important phenomenon nowadays, which can help us to protect us and save us the isolated places if we can lost over there, so we can come back to this just point. And geotagging was also incorporated at that time when the navy was started the journey in the deep sea. There was also they used to do the geotagging by which they can get the where the location is, where the what is the for getting. And through this geotagging, one very important things has been invented, like Digha, the seaside, which is placed in West Bengal. We don't know what is the outer part of this sea. So through this geotagging, the scientist has discovered that in this geotagging there is the outer part is nothing is there, only the Antarctica. So this geotagging process, that's why very important for nowadays for recollecting the situations and everything what is happening over there, and isolated peoples, isolated places we can discover through this process. And that was the previous topic. And then this topic, this sensation, that means the cleanliness here in this Fakir Mohan University in Odisha. So nice, so clean area, and they have maintained this such type of, that's why we are such Bharat mission has been started. But though it is a meaningful way, but we at that time we can also develop the cleanliness process in the our surrounding area, and this cleanliness will give you the positive energy, not only in this the campus or university, wherever the educational institution, whatever we used to go, but this cleanliness will encourage if we can practice in our home. So we can develop the home strategy, and there is a positivism could have been generated, and this positivism will develop your mental status. This positivism will give you the eye soothing nature, and this eye soothing nature will provide you the sustainability. What is the sustainability? Because how much you are important, how much you are input yourself, that input you need, you want the output. So when you are asking for this output, that time you have to practice
practice the cleanliness, because this cleanliness, like हम लोग पूजा करते हैं, पूजा करने के वक्त में हम जब भी देखो, मंदिर में देखो, जहाँ पे भी जाओ, बहुत गंदा हो जाते हैं, क्योंकि ये जो फूल वगैरह जो ये लोग चढ़ाते हैं, तो इसी के हिसाब से ये जो सिस्टम है हमारी. बट इफ यू कैन गो टू द church, I'm not dissuading to any cult or any system, but there is a system we should maintain. But there is another temples, if we can go, there is a so clean. If you can go to the Punjab and Sharna Mandir, which is absolutely clean, but that cleanliness will give you the dedication. And if you can go to the Mayapur, that is also very clean. That cleanliness will, because puja is nothing, it is a concentration, and which concentration will generate your positive energy and your cleanliness of your mind and soul. So if you want to clean yourself, your mind and your soul, then you can clean your surroundings. That's why the cleanliness is very important. And energy orientation, we know the five energies which is developing our total generations wise, because five energies are very important for making us more powerful. And we believe that in Hinduism or Hindu mythology believes that the five energy, there is river, there is no energy can be destroyed, the energy used to be transformed. So this transformation is one and another shape of this energy, and this shape of this energy will also provide you the cleanliness nature. Your cleanliness will provide you the behavioral aspects, your nature, your talent, your probability, your possibilities, whatever you wish to do, your work, your everyday life, day-to-day life, everything is depending upon this cleanliness and the energy sustainability. If you can make yourself clean, then you are restoring energy. That energy is required for our health, our socio-cultural benefit, psychological benefit, socio-economic benefit, everything. Because those tribes, those who are maintaining their they are making their gathering system. This gathering system is started from the cleanliness, because the soil leaves they are collecting, they are gathering, and they are making for their economic sustainability. That is also they are cleaning the forest for, at the same time they are benefited themselves by this, the economic sustainability, and benefited by their the society at large. Then the economic eco balance, they are maintaining the eco balance, at the same time they are maintaining their livelihood sustainability. Thank you very much. Thanks for giving me such an opportunity for saying on this AYUSH SAMRIDDHI platform. Thank Thanks you. a lot. Sorry, we have troubled you. Sorry, but thank you. Thank you very Okay, thank you. much. God bless you. Now I would like to Thank you. request Dr. Sakat Vasuji. Welcome, Sakatji. Welcome. Welcome. Thank you so much. Thank you so much. Uh, because we are talking of clean energy, thank you. Professor Pravan Sharma has very nicely illustrated what we understand by clean energy, why it is important, and how significant it is for our economy and stuff. I am going to highlight and conclude on this part, on this clean energy technology, some of the challenges of this new clean energy. We are talking about the clean energy, no doubt. It is one of the very important alternative energy sources. It is pollution free, and it has strong impact on cleaning our environment and stuff. But the part is that whether we are able to afford it at this present point of time, because the cost of generating this new technology, it is getting extremely challenging for the poorer countries to afford to it. For example, the wind, whether it is wind turbine or whether it is tidal energy, whether it is wave energy or nuclear energy, all these are very good options, but only very powerful countries are capable of utilizing it. See, for example, if we talk about a simple, small, poor nation like Burkina Faso in West and Africa, or Cameroon, or maybe other impoverished countries, third world nations of South Asia, Africa, Latin America, are they capable enough to establish this technology for producing alternative energy resources or clean energy? Because clean energy comes with a cost. It also needs research and development for the development of these resources that needs to be installed. Also, there is this challenge of replacing the conventional energy system with
this new alternative energy system, which is environment friendly. There is no doubt about that they are environment friendly. There is no doubt that this is going to change the environment and stuff. But the problem is that, can we make it available and accessible to the whole world? Unless the majority of the world slowly makes transitions or transformations into alternative energy resources, only a handful country using alternative energy resources is not going to make a significant global impact that we are talking about. Think about climate change. It is not just a problem of USA or Europe or Asia or just India or China. This is a global problem. Why are we having so much trouble in dealing with climate change, global warming, ozone depletion related themes and issues? It is because these are global challenges where all the countries are not on the same platform. There is a strong divide between the developed and the underdeveloped countries, first world and third world nations, rich and the poor. Just think about this clean technology that we are talking about. Say, for an example, there are many Pacific islands that need to use these alternative energy resources. Do they have that economical strength to establish this energy system? So they are going with the conventional energy system because they do not have, neither have the means, nor have the technology available, nor do they have enough financial strength to alternate and change this into their country so that we become energy efficient, as well as we are capable of installing clean energy system. Even in India, look at our huge country. Because coal and other things are easily available and accessible, most of our energy generating system are using this conventional system. We may like hydropower, we may like this thermal power, tidal power, geothermal energy and nuclear power, but are we able to even establish those centers extensively? We do have this, but not at a very significant level. Only at the solar energy use that India has really make a global impact, and their increasing use and applications has made it accessible and a very good model for the whole world. But it's a huge, ours is a huge country with a huge population dependent on energy. We are dependent on energy, but still today the vast amount of energy comes from the conventional energy resources. We are not being able to adapt completely to the clean energy. We are making targets, maybe 10 years from now, 20 years from now, 30 years from now. Even United States of America, one of the most economically strong, powerful country, have they been able to convert their energy system into the clean energy system? Why are we failing? Because we need that economic strength to do this energy transformation, which is not a very easy thing to do. The fossil fuels are easily accessible. Fossil fuels are generated. We are collecting it from the resources that we have, and then we have developed a distribution system globally, that where we are looking at prices and we are establishing, and this system has been there for a long time. It is not so easy to replace the system with the alternative energy system, because the cost of energy production will go high. How many countries in the world, including United States, in spite of saying that we are looking for alternative energy resources, are being able to implement it? So this is one of the formidable challenges. The second challenge is, for producing the alternative energy systems, for example, these wind turbines, which is definitely a great thing. Canada has huge number of windmills and stuff. But think about the production, these huge amount of energy, these great gigantic fans, their machines and stuff, the energy system that is used to produce them comes from the conventional system. We are burning oil, we are burning coal to produce this alternative energy systems infrastructure. And then when we are establishing it, it has a huge significant cost. Richer countries with smaller population and better economy are able to sustain them, but larger underdeveloped or developing countries with substantially huge population with lesser income are unable to install and establish and run them sustainably. So this has become a very significant challenge. And sporadic use of alternative energy across the world is not going to make a significant impact on the energy scenario, because we are still way farther where we are able to establish this globally. Furthermore, developed countries of the world are not ready to share these alternative technology at a cheaper or even free for those countries who could not afford them.
But unless we could make this available, accessible to other countries who want to use this clean energy, then this clean energy revolution is getting delayed over the years. New technologies are coming, new improvisations are made. There is no doubt about that. And they are showing increasingly that they are so much efficient and that it is absolutely clean. But the cost, the accessibility, the availability, and the challenge of transition is humongous. Last but not the least, while we talk about clean energy, the alternative energy resources are not always very clean. Think about the tidal energy, where fans like our windmills are established below the ocean surface. The establishment of these tidal mills at the ocean floor has detrimental impact on the ocean ecosystem as well as on the ecosystem as well as the ocean floor, which is disrupted, degraded over the time. Their maintenance is also a significant challenge, and because it is directly implanted in the ocean system, it has significant negative impact on the ecosystem. Furthermore, the moving turbines are cause of deaths of a large number of marine animals species that is impacting their life cycle. Similarly, we talk about these windmills, but if you go to the windmill areas that I have investigated in Canada, you won't see single birds down there. Many birds get attracted by these swings that it is producing, the sucking pressure that is generated, and they are hit by the fan and they are dying in large numbers. The government does not want to show this. So in many places, there are people in the morning who will go on the behalf of the government and collect the dead animals, particularly the dead birds, bats, and other insects and stuff that has been killed instantly by moving of these fans in huge numbers. Also, over the years, the application and establishment of more and more windmills has been found to impact the rotation speed of the windmill. So down the line, the windmill that was very, very energy efficient is becoming more costly and they're not producing that amount of energy. We didn't know this unless we have been utilizing this and looking through this system for a long time. So there are innumerable challenges associated with the clean energy technology that needs to be answered. We have seen the conventional energy system needs replacement, but we both economically and the side effects that is coming up is also making significant challenges. New heat source island in countries like where the population is heavily densely populated, they are finding that the solar panels that they have on the top of the roof, the bottom of the solar panels are getting extremely heated as you are, and this heat is not getting a chance to be released because the construction of the building are so bad and the material used in the construction of the building is so bad that there is always a heat trapping. So definitely it is generating energy, but it is also causing heat trapping. So around the building, the heat is not being able to be released very properly, which is producing heat sinks or heat islands in many populated parts of the cities, thinking that it is counter efficient when you are establishing the alternative energy system. We need to find solutions to this. There is definitely research going on how to make them more efficient and heat releasing, but there are challenges and problems. And finally, the affordability becomes a very, very significant part. So clean energy definitely is the future, but how to implement this future financially, with in terms of accessibility and availability, and how the technology transfers can be done smoothly among various countries, it's still a big question. So we are still a long way from the implementation, massive or wide scale implementation of clean energy technology around the world. This is a tragedy, but this is also a reality that we need to answer. Thank you very much for giving me this opportunity. It has always been a pleasure. Thank you. बहुत शानदार शेखर जी, बहुत ही अच्छा। आदरणीय अग्निहोत्री। बहुत ही अच्छा। आप तो एक सांस में सारी बात बता गए। एक लास्ट पे आपने जो चीजें अलर्ट की वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई रिगार्डिंग द प्रॉपर building material to be used for the building so that the surrounding be so cooperative and conducive for the means generating the electricity with the help of this solar panel and solar gift. Because recently I got it done a month back, and I've been allowed 3 point something 276 against the 4 kilowatt connection. So though they told that this time the panels are so good,
that these are also working from the lower side also, with the help of the heat or floor temperature. They remain active even after the sunset. So this is really wonderful, and as you informed that the much more work is to be chalked out. So in that way, I am getting almost say if 24 unit, not average, but is on one day, and consumption is 17 units. So it is really a win-win situation for us, and we are not getting any electricity bill of Uttarakhand Corporation, electric operation, for last 1.5 months. So of course, and in this way, the energy is being saved, and clean energy we are getting in that way. So thank you so much for your knowledgeful presentation with the help of the say few guidelines. So I extend my thanks to you and also Madam Suparna Sandal Mukherjee ji. I think our guest speakers are given the full guidance to us on this topic. So we would like to invite now other dignitaries available on our platform as a open session this thing. So I think since Professor Rambi Sharma are with us, and he is always with us, not only on this platform of webinar. He he has listened our all the three webinars, starting from this Raskarpur to our second and third one. So I would like to invite uh, his important say inputs regarding all these three webinars to sum up, say within 4 or 5 minutes. Professor Rambi Sharma sir, namaskar. नमस्कार भाई जी, पवन जी, आदरणीय भाई जी लक्ष्मीकांत जी, तीनों सेमिनार मेरे लिए एक छात्र के रूप में सुनने का अवसर मिला। आप सभी को IRS को धन्यवाद। कुछ न कुछ ज्ञान की चर्चा होती है तो निश्चित ही कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, तो अपने आप को मैं धन्य समझता हूँ कि इस तरह की बातें होती हैं। जहाँ तक जो दोनों सब्जेक्ट थे मेरे लिए नए ही थे, मगर दोनों नए सब्जेक्ट होने की वजह से नवाचार होता है तो उसमें कुछ न कुछ और ज्यादा चीजें मिलती हैं। जैसा पवन जी ने बताया, उस चीज से हम लोग दौर से भी हम लोग भी गुजर रहे हैं कि अब अपने जो NCISM ने जो कर दिया है कि हम लोगों को वहीं रखना है, टाइमलाइन दिखानी है, तो टाइमलाइन के दिखाने के चक्कर में, टेंशन में लोगों का BP बढ़ा रहता है। जो लोग जाते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाते, उनका BP बढ़ा रहता है। तो ये एक अच्छा काम इसका ये है कि उसके लिए अब आप, ये तो तलवार है, तलवार को आप आत्मरक्षा के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और दूसरे की हत्या भी कर सकते हैं। अब उसका प्रयोग किस तरह से कर रहे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग आप किस तरह से करते हैं। एटॉमिक एनर्जी, अपने अभी जस्ट बात हो रही थी एनर्जी के बारे में, सेफ एनर्जी के बारे में, ग्रीन एनर्जी के बारे में। तो एटॉमिक एनर्जी को आप अपने बिजली उत्पादन के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, और बिजली उत्पादन की जगह पे आप विस्फोट भी कर सकते हैं, नागासाकी की तरह से अपने लोगों की हत्या भी कर सकते हैं। तो उसको लोग सेव भी कर सकते हैं, लोगों को उससे, और लोगों को उससे मार भी सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी है, उसका किस तरह से प्रयोग करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि शास्त्रम शस्त्रम और वो पात्र, जैसे आचार्य कहता है, शास्त्र और शस्त्र जो है पात्र की अपेक्षा करता है कि किस पात्र के पास जा रहा है। यही टेक्नोलॉजी अगर किसी अपराधी के पास पहुंच जाती है तो निश्चित ही वो अपने लिए हार्मफुल है, और किसी अच्छी पुलिस के पास पहुंच जाती है तो अपराधी को पकड़ने के लिए भी काम आती है। जैसा जयकत जी ने बताया कि बहुत ज्यादा इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी है। अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, डाटा, अपना डेटा है, डाटा, अब इसका प्रॉब्लम क्या है कि डेटा इसका अपने लीक हो सकता है, डेटा लीक हो सकता है तो सारा अपने कहाँ कौन कैसे जा रहा है। आज के जमाने में तो आदमी बेड में क्या काम कर रहा है वो भी उसके ऊपर टाइमलाइन के अनुसार उसको पता चल सकता है, तो हार्मफुल भी है। तो इसका प्रयोग कैसे करें। अभी ग्रीन एनर्जी की बात आई, तो ग्रीन एनर्जी के लिए फिर से हम लोगों को अपनी वैदिक संस्कृति पर ही जाना पड़ेगा। जितनी भी एनर्जी की प्रॉब्लम हो रही है वो सारी एनर्जी की प्रॉब्लम हम मॉडिफिकेशन जितना करते जा रहे हैं उसकी वजह से हो रही है। पहले हम सूर्य के समय में ही सारे काम कर निपटा लेते थे, आज फिर सौर ऊर्जा का ही प्रयोग कर रहे हैं।
पहले हम लोग जो एनर्जी, ट्रैक्टर की एनर्जी चल रही है, आज कृषि यंत्रों का काम चल रहा है, वो सारा का सारा डीजल से चल रहा है। पहले हम लोग गाय से काम करते थे, बैल से काम करते थे, उसकी जो एनर्जी थी वो किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं करती थी, और उससे अपने उर्वरक भी पैदा होते थे, और उर्वरक पैदा होते थे वो भी काम आते थे। तो निश्चित ही हमारी वैदिक संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, वो प्रकृति के साथ में सहवास करने का कारण, सहवास वो नहीं, सहवास का मतलब साथ में रहने की जो प्रकृति का काम है, वो न तो प्रकृति को नुकसान करती है, न प्रकृति हमको नुकसान करती है। तो मुझे लगता है कि 100-200 साल में फिर से हम सनातन संस्कृति की ओर जाते हुए, फिर से गाय को गोमाता मानते हुए, एनर्जी का सोर्स मानते हुए उसको, और फिर से गोमाता की तरफ आएंगे, ऐसा मेरा मानना है एनर्जी के बारे में। जो रसशास्त्र की बात हुई थी, उसमें एक स्टूडेंट के रूप में मैं थोड़ा सा उसमें ऐड कर देता हूँ। हम लोग जो यूजी में ही इसके प्रैक्टिकल किए थे, पीजी में इतना ज्यादा हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सब्जेक्ट अलग था। यूजी में हम लोगों को कैसे कूपी बनाई जाती है, जो बियर की बोतल आती है उसके ऊपर किस तरह से लेप किया जाता है, कौन सी मिट्टी का लेप करते हैं तो कौन सी मिट्टी यूज करते हैं, उस मिट्टी में क्या क्या मिलाया जाता है, तो कूपी बनाना सिखाया जाता था। कूपी को तोड़ना कैसे, उसके ऊपर सूतरी लगाना, सूतरी लगा के उसमें आग लगाना, उसके ऊपर पानी डाल देना, उसको निकालना, ये सब हम लोग यूजी में सीखे थे। और उसके अंदर जो गंधक उसके उसमें गले में लगता था, उसमें सलाई बराबर चलाते रहने पड़ती थी। तो हम लोगों की ड्यूटी रहती थी, हम लोगों ने इस चीज को यूजी में सीखा था। आदरणीय झाजी ने जो बात की, तो झाजी लोधरा में भी रहे थे जहाँ पर मैं पढ़ा, झाजी जामनगर में भी रहे थे जहाँ पर वो मैं पढ़ा, और झाजी ने जिनका वर्णन किया, अटारा जी का, वो यूजी में लेक्चरर थे, बाद में प्रोफेसर बने, उनके अंडर में वो काम होते थे। तो ये काम हम लोगों के समय यूजी में हुआ करते थे। आज दुर्भाग्य ये है कि हमारे उदयपुर की मैं जानता हूँ, मैं जहाँ रहा हूँ वहाँ की बात करता हूँ, दुनिया भर की बात नहीं जानता मैं क्या हो रहा है। आज उदयपुर में 2011 से कूपी पर कुरासान नहीं बना है, और 2011 से आज 24 हो गया, जाने कितने बच्चे अपने पीजी करके निकल गए। अब अंदाज लगा लीजिए कितना हिरास हुआ है हमारा इसके अंदर। अब बात आती है, भाई जी ने लक्ष्मीकांत जी ने बात की थी, निश्चित ही हमें अभी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। हम अपने आप को ये नहीं कह सकते कि हम बहुत संपूर्ण हैं, नहीं, संपूर्ण जब होंगे जब दुनिया मानेगी। और दुनिया कब मानेगी कि 5 प्रकार से, 10 प्रकार से, 14 प्रकार से, 36 प्रकार से रस सिंदूर बना रहे हैं, रस पुष्प बना रहे हैं। तो 36 प्रकार के रस पुष्प में क्या बायोकेमिकल चेंजेज आ रहा है, क्या केमिकल चेंजेज आ रहे हैं, क्या बॉन्डिंग चेंजेज आ रही है, उसको हम एनालिसिस कराएं और उसका एक्सपेरिमेंट करें, और उस एक्सपेरिमेंट को हम अपने डॉक्यूमेंटेशन करें। आज के जमाने, वो जमाना गया है रसतंत्री का, तरंगिणी का जमाना। आज के जमाने में हम आईआईटी से एमयू कर सकते हैं, और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स, कौन सी अपने चेंजेस आ रहे हैं उसमें केमिकल के अंदर, वो अपने करके उसको साइंटिफिक रूप से प्रयोग कर सकते हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको प्रयोग कर सकते हैं। मगर दुर्भाग्य कि हमारे द्रव्य गुण का आदमी है, वो अपने द्रव्य गुण पर नहीं काम करके ऐसा क्लिनिकल सब्जेक्ट लेता है, वो गायनी में काम करता है। वो रसशास्त्र के जो आदमी है, वो रसशास्त्र पे काम करके क्लिनिकल सब्जेक्ट पे काम करता है, एक मेडिसिन बना के क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल किसी को और को रहने दें, फार्मा का काम फार्मा करे, फार्माकोग्नोसी का फार्माकोग्नोसी करे, और क्लिनिकल ट्रायल का काम क्लिनिकल ट्रायल करे, तो निश्चित ये साइंटिफिक हो पाएगा। अगर मैं ही दवाई बना लूँ, मैं ही उसकी ट्रायल कर लूँ, और उसी का रिजल्ट भी मैं ही दे दूँ, तो इस तरह से नहीं होगा। इसको साइंटिफिक वे में अगर करना है तो साइंटिफिक वे में करना पड़ेगा, और तभी दुनिया इसको स्वीकार करेगी। वरना हम कुछ भी कहते रहे कि निरापद है, इससे कोई साइंटिफिक कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, ये दुनिया मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें अपने आप को साइंटिफिक वे में ढालना पड़ेगा, तब दुनिया को मानेंगे। बाकी के तो आचार्यों ने जो काम किया था वो बहुत अच्छा किया था, उसके बाद कुछ काम ही नहीं हुआ। हम लोगों के आने के बाद कोई काम ही नहीं हुआ। उस काम को निश्चित ही बहुत कुछ करने की जरूरत है। तो मैं शायद हो सकता है इसमें थोड़ा गलत बोल गया हूँ, कटु बोल गया हूँ, मगर जिसका जो उद्देश्य है उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलत हैं। आचार्यों ने जो कहा था उससे आगे हम आगे बात नहीं बढ़ा पाए हैं। जो विधियां आचार्यों ने बताई थी उससे दूसरी विधि नहीं पहुंच पाई अब तक। ये 200 साल का जो प्रयोग हुआ, जो 100 साल का प्रयोग हुआ, उसमें कुछ नया हम नहीं कर पाए। उन्हीं ट्रायल को, उन्हीं विधियों को प्रयोग कर रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। निश्चित ही और आगे बढ़ना चाहिए साइंटिफिक रूप से काम करने में, ये मेरा मानना है। आप लोगों ने मुझे सुनने के अवसर दिया, बोलने की जगह पे, क्योंकि इसमें तो ज्ञान ही प्राप्त करना है, सुनने का अवसर दिया, वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और निश्चित ही कुछ बातें जो मैं फील करता हूँ उसके लिए, हिंगुलोत पार्द, पार्द मिलता ही नहीं, हिंगुल ही नहीं मिलता, तो हिंगुलोत पार्द कहाँ से मिलेगा? तो हिंगुल को हमको बनाना पड़ता है।
हम लोगों ने हिंगुलोत्पाद बनाया, उसको अंदर नींबू के रस के अंदर घोंटा, फिर उसमें लेप किया, लेप करके उसका पातन किया। तो ये हम लोग यूजी में किए हुए चीजें हैं। और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ पीजी के अंदर ये चीजें नहीं हो रही हैं, पीजी के अंदर नहीं हो रही है, और पीजी करके लोग चले जा रहे हैं, बच्चे ले जा रहे हैं और सर्विस कर रहे हैं, और सर्विस करने के बाद नहीं हो उनको रहा है। प्रैक्टिकली नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैं अपने कॉलेज की बात जानता हूँ, दूसरी दुनिया की बात नहीं जानता। सब लोग क्लिनिकल, सब लोग रसशास्त्र का पेशेंट होगा तो डॉक्टर साहब इसलिए उसमें रक्त प्रदर पे मेडिसिन हमने बनाई है, रक्त प्रदर पे इसका ट्रायल करवा दो, 25 पेशेंट इसको दे देना। अरे रसशास्त्र के पेशेंट है, आप ट्रायल करने के लिए दूसरों को दो ना, आप मेडिसिन बनाओ, विभिन्न प्रकार की मेडिसिन बनाओ, उनका ट्रायल करके। हमने ये 5 प्रकार की मेडिसिन बनाई है, इनका कंपेरेटिवली बताइए किस तरह से इसका काम होता है। मॉडर्न साइंस यही करती है, फार्माकोलॉजी वाले फार्माकोलॉजी का काम करते हैं, फार्मेसी वाले फार्माकोलॉजी का काम करते हैं, ट्रायल वाले ट्रायल करते हैं। इस तरह से उनका रिजल्ट करता है। मुझे लगता है ऐसा ही हमको करना पड़ेगा, तब फायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अगर कोई गलत बोला हूँ तो माफ कीजिएगा। धन्यवाद आपका। आपने पहले बताया कि IRES मंच ने आपको सुनने का मौका दिया। अब आपने IRES मंच पे उपस्थित सभी लोगों को सुनने का मौका दिया। समय के अनुसार आपकी मैंने वक्तव्य पर या मंतव्य पर आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर लक्ष्मीकांत द्विवेदी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वही कुछ उसमें कह सकते हैं, कुछ उसमें कमेंट कर सकते हैं, पटाक्षेप कर सकते हैं। ये उनके ही विषय की स्थिति है। मैं आदरणीय गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि वो आज के इस पूरे वेबिनार के समापन पर आशीर्वचन देने की कृपा करिए। प्रणाम सर। अगर आप कंफर्टेबल हो तो जी प्रणाम। नमस्कार सर, सभी विद्वानों को। आज के तीनों सत्र चर्चा के बहुत अच्छे रहे। कुछ न कुछ जो है वैद्य समूह और निसंशय कराणाम के रास्ते में हम लोग प्रयास करें। पहले जो रस विद्या पढ़ाई जाती थी उसका प्रोस्पेक्टिव काफी अलग था। आयुर्वेद के साथ जुड़ करके 8वीं सदी से जो कुछ भी रस विद्या वैद्यों ने रस सिद्धों से सीखी और अपने शिष्यों को पढ़ाने के लिए, वो ग्रंथ आज हमको मिलते हैं संग्रह काल के। तो मौलिक रस ग्रंथ तो उपलब्धि नहीं है। तो उसके बाद में जो कुछ आज मिलता है उसमें भी हम आधुनिक ज्ञान के आधार पे अपने आप को वैज्ञानिक प्रमाणित करने के लिए कुछ करते हैं। तो टर्मिनोलॉजी तो कम से कम आयुर्वेद या रसशास्त्र की होनी चाहिए। हम उससे हटकर के सिद्धांतों का जो मूल भाव हैं उनसे हटके और आधुनिक डिमांड और सप्लाई के आधार पे जैसा कंपनियां दवा बनाती है वैसी हालत में, तो चिकित्सा विधा या शिक्षा भी ऐसी हो गई है कि त्रिसूत्रात्मक से शुरू हुए थे तो क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल का विवाद ही नहीं था। हेतु लिंग और औसत 3 ही चीज थी और वो तीनों आना चाहिए। और आज जो विशेषज्ञता का जमाना आ गया तो ये हो गया साहब, द्रवगुण मतलब हर्बल मेडिसिन, रसशास्त्र मतलब मेटेलिक मेडिसिन। ऐसा नहीं है। चरक ने जो लिखा है वो तत्पुनः त्रिविधम प्रोक्तम जांगम उद्भिद पार्थिवम, और रसशास्त्र में जो द्रव्य हैं प्रायः त्रिविध होते हैं और काम में लेते हुए देखा है। तो सल्फर का ही ले लें, लहसुन में होगा, या सेलेनियम को ले लें, लहसुन में होगा। तो ये सब क्या है? तो वो ज्ञान उन लोगों को था और हम लोग उसको हट के और आज के मोलिक्यूल और 4th ग्रेड की मेडिसिन में जो मोलिक्यूल आता है फाइटोकेमिकल्स वगैरह उसकी तरफ जा रहे हैं। और हमारी जो चीज है उसको हम भूल गए कि साहब उसमें एक ही में अगर बहुत सारे कंपाउंड हैं और इस तरह के फाइटोमोलिक्यूल्स हैं, उसमें से एक चीज अलग करके उसी को काम में ले रहे हैं। तो पपीते में से आर्तव जनन के लिए कुछ द्रव्य अलग निकाल लिया और गलती से चूहों को दे दिया। माइस टेस्ट में वहां पे एक चूहा भी था और उसको दिया और उसमें जो शुक्राणु नष्ट हुए तो हुआ साहब इसमें एक सब्सटेंस ऐसा भी है जो शुक्राणु नाशक है, इसलिए उसमें से उसको और अलग कर लिया। किंतु वो सब रिसर्च होने के बाद में बाजार में क्या आया? तो वास्तव में हम लोग जो बात करते हैं शोध की और जितना खर्चा करते हैं उसके बाद में अंग्रेजी नाम देते हैं। तो आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो अगर देखें तो रस वैशेषिक सूत्र में मिलेगा कि 60 रस हैं, उसके 62 या 63 उस तरह के जो भेद रस आयुर्वेद में बताए, उसको उस टीकाकार ने जो जैन मुनि थे उन्होंने 766 या 600 उस तरह से इतने भेद कर दिए और उनके उदाहरण दे दिए। आज हम 66 रसों के उदाहरण देने में 2-3 द्रव्य मिला करके कोई रस बनेगा इस तरह का बताते हैं। तो जो सोच हमारी आधुनिक हो गई और आधुनिक डिमांड के आधार पे, तो फिर आयुर्वेद की बजाय डॉक्टरी पढ़ लेना चाहिए, उस रास्ते पे जाना चाहिए। क्यों आयुर्वेद को ढो करके और
जो समय हम करते हैं। पवन शर्मा जी ने 10,000 श्लोक याद किए, मुझे तो ईमानदारी से 100 श्लोक भी आज याद नहीं है, किंतु हमने कभी एक ग्रंथ पूरा नहीं पढ़ा, पल्लवग्राही न्याय से जो कुछ हाथ में आया उसको पलटते गए। किंतु ये है कि साहब कुछ न कुछ नया मिल जाता है और संदर्भ जरूर उसको देखते हैं तो एक मन में ये रहता है कि इसके सब हम वैज्ञानिक प्रमाणित करने के चक्कर में जो कुछ केमिकल नाम लेते हैं उस तरह का होता नहीं है, क्योंकि उसमें भौतिक स्वरूप का भी काफी अंतर आता है। और ये जहर मोहरा और जो कोर्सेयास में है उसमें आपको रासायनिक संगठन एक जैसा मिलेगा, तो केमिकल नाम में तो कोई अंतर नहीं ग्रुप में, किंतु भौतिक स्वरूप में अंतर होने से एफिकेसी में अंतर आ रहा है। ऐसे रसशास्त्र में बहुत सारे द्रव्य हैं, तो इसलिए कोई एक सीधा उठा के केमिकल नाम दे देना और आइडेंटिटी कर लें तो सब वो ज्यादा शुद्ध नहीं है। होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, उसके बाद में जो हमारा एक निर्णय होगा। नहीं तो बहुत सारी जो डिमांड है उसको हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं, और जैसे गूगल शुद्ध पूरा मिल जाए, शिलाजीत अच्छा पूरा मिल जाए तो मानक ही नहीं मिलेंगे, और मानक मिलेंगे तो उस तरह का द्रव्य मार्केट में नहीं मिलेगा। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, जो हम लोग चाहे कितनी ही चर्चा करें, जो स्थिति है वो वहीं की वही है कि नए नए सब्जेक्ट आते हैं, उनको चर्चा कर लेते हैं, जोड़ते जाते हैं, किंतु पुरानी चीजों को हटाते जाते हैं। वो पुरानी चीज हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में जो स्वरूप है वहाँ मौलिक स्वरूप तो तभी पता लगेगा जब पुरानी चीजों के साथ में तालमेल बैठेगा, और नहीं तो चिकित्सा की परिभाषा शाश्वत है, पूरा उद्देश्य क्लियर है, थानेदारी हम लोगों ने बांटी और ये आयुर्वेद, शुद्ध आयुर्वेद, इंटीग्रेटेड आयुर्वेद ऐसा कर दिया, जबकि उन्होंने तो ये लिखा था धातु साम्य है वो हमारा उद्देश्य है, और उसके लिए हमको जो कुछ भी प्रयोग करते हैं वो सब आजादी है। चरक ने तो मना नहीं किया कि ये आयुर्वेदिक ड्रग है, ये रसौषधि है, या ये एलोपैथी की ड्रग है। हम लोग ही आपस में उलझते हैं और अपनी अपनी समझ के आधार पर उसमें उलझते जाते हैं, क्योंकि हमको जो उद्देश्य है वो एक तरफ रख देते हैं। नहीं तो क्या है कि कोई भी चीज है उसका हित और अहित दोनों का ज्ञान हमको होना चाहिए, और जिसका हमको ज्ञान है उसका प्रयोग हमको करना आना चाहिए। तो वहाँ कहीं भी मॉडर्न ड्रग या मॉडर्न मोलिक्यूल या नैनो पार्टिकल, इन सब में ज्ञान होने के बाद में उपयोग करने में मना ही नहीं है। किंतु जिस चीज को हम पढ़ते हैं और उपयोग में लालच देते हैं, सब डॉक्टर कहलाएंगे, हमको सैलरी अच्छी मिलेगी इसलिए हमको न्यायालय में वो साक्ष्य के रूप में देना, इसलिए टर्मिनोलॉजी भी वही रखनी है जो डब्ल्यूएचओ ने बताई। तो सब आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी जो डब्ल्यूएचओ से मान्य है उसको तो प्रयोग कर ले हम लोग, और नियर वही शब्द अंग्रेजी का लिया उसके आधार पर हम उनकी दवा देना लग जाएं या उनके सिद्धांतों पर सोचने लग जाएं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पत्ते तो हरे हरे हैं किंतु बेसिक सिद्धांत मूल जो है वो अलग अलग है। इसलिए हमको आयुर्वेद का पूरा ज्ञान होना चाहिए, उसी के लिए आपको पूछेंगे। बाकी तो मॉडर्न मेडिसिन तो अगले चौराहे पे खड़ी है, पीछे देख रही है और स्क्रीनिंग करके आपको अपनी टर्मिनोलॉजी में वो लेना चाहते हैं। इसलिए मेरे को तो यही समझ है कि सब हमको जिसका ज्ञान है उसका पूरा सदुपयोग करें, और वो चीज लाभ करती है वो उन सिद्धांतों पे नहीं करती जो आज के उसमें पढ़ाए जाते हैं। उसके भी आगे कोई सीमा है, जहाँ उनकी विचारधारा खत्म होती है वहां से आयुर्वेद की विचारधारा शुरू होती है, ये मैं समझ पाता हूँ। इसी के साथ आप सभी को जो ग्रीन एनर्जी के लिए भी बात हुई या इस तरह का जो चला था, या जो बायो उसका जियो टेक्नोलॉजी एगिंग का मामला है, तो ये भी अच्छे ज्ञानवर्धक हैं, और हर चीज के हानि लाभ दोनों होते हैं। इसीलिए आयुर्वेद की परिभाषा में पहले लिखा कि आयु के लिए, शरीर के लिए जो हित और अहित दोनों है उस सब को हमको ध्यान रखना है। राय की परिभाषा उन्होंने बता दी, तो उसमें तो कहीं थानेदारी बांटी नहीं, किंतु आज हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग विभाग करके, विशेषज्ञ बन करके, और फिर जनरल प्रैक्टिस वाले बहुत कम मिलेंगे और सब विशेषज्ञ हैं, तो जैसे ही सामने आया कार्डियोलॉजिस्ट पास में जाएगा वो स्टेंट लगाएगा या एंजियोग्राफी करेगा, गुलमन आसन का प्रयास ही नहीं करेगा। तो होलिस्टिक अप्रोच में हमको ज्ञान होना चाहिए, इतना ही मेरा एक नम्र निवेदन है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार आपका। आपके आशीर्वचन से दो लाइन बहुत साफ साफ मिल गई कि हमें आयुर्वेद का पूरा ज्ञान होना चाहिए। और कंटेम्प्रेरी हमारे प्रोफेसर रामवीर शर्मा साहब ने भी एक गाइडलाइन दी कि आयुर्वेद का पूरा ज्ञान, अगर हम किसी विषय के विशेषज्ञ हैं, माने इस सब्जेक्ट में एमडी पीएचडी हैं, उसका होना चाहिए। क्योंकि वही रसशास्त्र में हम बढ़िया बढ़िया औषधियाँ बना के दें, फिर आगे का चिकित्सा वाले या बालो प्रसूति वाले अपना टहल करते हैं, तो वो उनका कंसंट्रेशन फिर औषध बनाने में ना होके अपने रिसर्च वर्क, अपने सैंपल साइज और उस पर आने वाली गतिविधियां उसकी स्टडी पर रहेगा। तो ऐसा कुछ ईमानदारी से अगर काम आगे बढ़ाया जाए तो जो भी अब उपलब्ध हैं या जो योग अब बनाए जा सकते हैं या प्रचलन में उपलब्ध हैं,
किन्हीं भी अच्छी स्टैंडर्ड फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों के द्वारा बनाए जाते हैं, तो उन पर अग्रतर शोध कार्य के लिए आज के माने शोधार्थियों को एनकरेज किया जा सकता है। और नए नए योग जो अभी तक बिल्कुल जिन पर काम नहीं हुआ है, अगर वो सहज बनाए जा सकते हैं एक्सपेरिमेंट लेवल पर या रिसर्च वर्क के लिए, तो वो कार्य कुछ कुछ चल ही रहा है, स्कूल में भी चल ही रहा है, पूरे भारत में चल ही रहा है। तो उस हिसाब से हमारे कार्य के प्रति और ज्ञान के प्रति जो निष्ठा और ईमानदारी वो बनी रहेगी। आपके आशीर्वचनों के लिए आपका बहुत बहुत हृदय से आभार है। और आज अपने सब लोग जो इस वेबिनार में जुड़े और उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा हम लोगों को आलोकित किया, उन सबका हृदय से आभार। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रणाम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, नमस्कार। प्रणाम सर, शुभरात्रि, शुभरात्रि सर, सभी के लिए शुभरात्रि। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।